लॉजिक ऑफ अनोवा। अनोवा सबको क्लियर है? इससे पहले कि मैं लॉजिक ऑफ अनोवा स्टार्ट कर दूं, अनोवा में कोई एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में किसी किस्म की हर्डल तो नहीं, किसी को कोई मिसकंसेप्शन टी टेस्ट या अनोवा में? एट पॉइंट 1.1 लॉजिक ऑफ अनोवा। Let us take a hypothetical data given in the table. The table 8.1 में data given a hypothetical data from an experimental examining learning performance under three temperature conditions. टेबल 8.1, यहाँ पे 3 ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट 1, ट्रीटमेंट 2, ट्रीटमेंट 3। एक टेम्परेचर है 50, एक टेम्परेचर है 70 और एक टेम्परेचर है 90। सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3। सैंपल 1 में जो डेटा आ रहा है हमारे पास 0, 1, 3, 1, 0, इसका मीन इक्वल है 1। सैंपल 2 में 4, 3, 6, 3, 4, इसका मीन आ रहा है 4। और सैंपल 3 में जब देखते हैं 1, 2, 2, 0, 0 और इसका मीन आ रहा है 1। इसकी एक्सप्लेनेशन दे लिया। देयर आर 3 सेपरेट सैंपल्स विद एन क्या नंबर ऑफ डेटा। जैसे अगर सैंपल 1 में देखें तो 0, 1, 3, 1, 0, सबके अंदर जो स्मॉल एन है, जो डेटा हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं वो 5 हैं इन ईच सैंपल। The dependent variable is the number of problems solved correctly. These data represent results of an independent measured experiment comparing learning performance under 3 temperature conditions. The score are variable and we want to measure the amount of variability. For example, the size of difference to explain where it comes from. To compare the total variability, we will combine all the score from all the separate samples into one group and then obtain one general measure of variability for the complete experiment. Once we have measured the total variability, we can begin to break it into separate components. The word analysis means breaking into smaller parts. Because we are going to analyze the variability, the process is called analysis of variance or ANOVA. This analysis process divides the total variability into two basic components. One, between treatment variance, and second, treatment effect. अब फर्स्ट कंपोनेंट को स्टडी करते हैं, बिटवीन ट्रीटमेंट वेरिएंस। Variance simply means difference, and to calculate the variance is the process of measuring how big the differences are for a set of numbers. The between treatment variance is measuring how much difference exists between the treatment conditions. In addition to measuring differences between treatment, the overall goal of ANOVA is to evaluate the differences between treatments. Specifically, the purpose for the analysis is to distinguish between two alternative explanations. Explanation A: the difference between the treatments have been caused by the treatment effects. B: the differences between the treatment are simply due to change. दो तरह की बिटवीन ट्रीटमेंट वेरिएंस में चेंज आ सकती है, एक कॉज एंड इफेक्ट ट्रीटमेंट की वजह से और एक सिंपली चेंज की वजह से इसमें डिफरेंस आ सकता है. Thus there are always two possible explanations for the variance differences that exist between treatment. One, treatment effect and chance. Treatment effect: the differences are caused by the treatment for the data
In table 8.1, the scores in sample 1 are obtained at room temperature of 50 and that of sample 2 at 70. It is possible that the difference between sample is caused by the difference in the room temperature. एक इसमें ट्रीटमेंट इफेक्ट का कह रहा है कि एक जो सैंपल 1 है फॉर एग्जांपल वो 50 टेम्परेचर रूम टेम्परेचर में लिया गया, दूसरा का जो टेम्परेचर है वो 70, उस रूम का टेम्परेचर 70, इस वजह से इसके अंदर इस डेटे की चेंजिंग आ रही हो। और जो चांस है जो सेकंड वन में कह रहा है the differences are simply due to chance. There is no treatment effect, even then we can expect some differences between samples. The chance differences are unplanned and unpredictable differences that are not caused or explained by any action of the researcher. Researchers commonly identify two primary sources for chance differences: individual differences, experimental error. In individual differences, each participant of the study has its own individual characteristics. Although it is reasonable to expect that different subjects will produce different scores, it is impossible to predict exactly what the difference will be. Experimental error. In any measurement, there is a chance of some degree of error. Thus, if a researcher measures the same individual twice under same conditions, there is greater possibility to obtain two different measurements. Often these differences are unplanned and unpredictable, so they are considered to be by chance. एक में कह रहा है चांस क्या है, एक चांस ये है कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस है हर बंदे की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी वजह से रिजल्ट डिफरेंट हो सकते हैं। और दूसरा एक्सपेरिमेंट मतलब क्या है, सेम पर्सन है, सेम मेयर उसने किया है, लेकिन पहली दफा रिजल्ट कुछ और आ सकता है, दूसरी दफा कुछ और आ सकता है, और वो भी अनप्लान्ड और अनप्रिडिक्टेबल है, इसे एक्सपेरिमेंटल एरर कहेंगे। Thus, when we calculate the between treatment variance, we are measuring differences that could be either by treatment effect or could simply be due to chance. जब हम बिटवीन ट्रीटमेंट वेरिएंस को स्टडी करते हैं तो उसके अंदर जो डिफरेंस आते हैं वो दो वजह से आते हैं, या ट्रीटमेंट इफेक्ट की वजह से आ रहे होंगे या बाय चांस आ रहे होंगे। इन अदर टू डेमोन्स्ट्रेट that the difference is really a treatment effect, we must establish that the differences between treatments are bigger than would be expected by chance alone. To accomplish this goal, we will determine how big the difference is when there is no treatment effect involved. That is, we will measure how much differences variance occurred by chance. To measure chances differences, we compute the variance within treatment. अगर हमने ये देखना है कि ये जो हम ट्रीटमेंट इफेक्ट देख रहे हैं जिसमें इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक के लिहाज से आते हैं, तो उनका जो डिफरेंसेस है वो ज्यादा डिफरेंसेस आएंगे, और एक्सपेरिमेंटल एरर के जो डिफरेंसेस है वो कम आएंगे। और इसी को हमने मजीद क्लियर करना है, मेयर करना है जो चांस के लिहाज से किस तरह डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, विद इन ट्रीटमेंट वेरिएंस स्टडी करते हैं। विद इन ट्रीटमेंट वेरिएंस, within each treatment condition, we have a set of individuals who are treated exactly the same, and the researcher does not do anything that would cause these individual participants to have different scores. For example, in table 8.1, the data shows that 5 individuals were treated as a 70 room temperature. Although these 5 students were all treated exactly the same, their scores are different. Question is, why are the scores different? A plain answer is that it is due to chance. Figure 8.1 showed the overall analysis of variance and identifies the sources of variability that are measured by each of two basic components. Total variability